हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहद पर जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई जिलों में मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है जो 7 मई को कराई जाएगी। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको बड़ी हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी, ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा इस पे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनीवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है। खुशकिस्मती से मैं इसमें पढ़ाता हूं, इसका इंस्ट्रक्टर हूं। जिनीवा में मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। तो उनकी जिनकी प्रताड़ना बढ़ती है, लड़ाई उनकी सफरिंग और प्रताड़ना कम हो, तो ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है। तो जब ये एक्सरसाइज कराई जाएगी और सारी कंट्रीज ने जिन्होंने जिनीवा कन्वेंशन साइन किया है, उन्होंने सिविल डिफेंस को भी अब तो ट्रेन करने का पूरा बीड़ा उठाया है। ये रेटिफाइड है पार्लियामेंट में। पर इसके ऊपर अगर कम तवज्जो कोई कंट्री देती है, कोई ज्यादा देती है, वो दूसरी बात है। पर हमारी 71 में बड़ा इसके ऊपर तवज्जो दी गई थी और इसके ऊपर बहुत ही खुलासे से खुल के काम हुआ था। अब ये बात हो रही है, इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि एयर रेड आ रहा है या मिसाइल अटैक होने वाला है, पब्लिक किस तरीके से अपना ब्लैकआउट करेगी और किस तरीके से वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में जाएगी। ट्रेंचेस या बंकर्स बनाए जाएंगे, उनमें प्रावधान होगा। जो घायल हो जाएंगे उनको किस तरीके से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाएगा, उनको वुंडेड्स को किस तरीके से सेव किया जाएगा। जो बॉम्ब्स गिरते हैं उनको, वो जो एक्सप्लोड नहीं होते, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स उनको क्लीन करेगी। जो डेब्रे में लोग धंस जाते हैं उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशंस और ब्लैकआउट्स, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस करती है। और सिविल डिफेंस किस तरीके से, अगर आपको इवैक्यूएट करना है, यहां से आग लग गई है, दुश्मन हमला आ रहा है, तो रेल में लोगों को बैठा के निकालना और रिसीव करना, रिफ्यूजीज का कैंप बनाना, या अगर किसी कोई कॉलोनी नष्ट हो गई है उनको किस तरीके से सेटल करना, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस के दौरान होता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने सायरन बजा के आप बताओ मैं यहां पे हूं, कहां जाऊंगा, कोई जगह नहीं है। हमने को पहले ही, आज से महीना पहले, 2 महीना पहले हमें ब्रेंचेस बंकर्स बनाने थे, सबको अलॉट होने चाहिए। सारे जो कॉलोनीज होती है RWA, सबका काम होना चाहिए। और वार्डन्स जो होते हैं, लोकल वार्डन्स, उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर एक कॉलोनी में जाके इंस्पेक्ट करें आपका प्रावधान है कि नहीं, मेडिसिन प्रॉब्लम। फिर न्यूक्लियर अटैक होने का अंदेशा है, क्या आपके न्यूक्लियर बंकर्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस हैं, न्यूक्लियर रिकवरी सेंटर्स हैं। ये सारा का बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, इसके ऊपर भी दुश्मन कर सकता है। ये सिर्फ थोड़ी है कि वो बड़ा आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो सब कुछ करेगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो किसी जिनीवा कन्वेंशन को नहीं मानेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। इसीलिए हमको ये एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सर, रशिया ने के द्वारा, और उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया है हिंदुस्तान को कि पहलगाम आतंकी हमले से निपटने के लिए इंडिया को जो भी मदद चाहिए होगी वो पुख्ता मदद रशिया की तरफ से की जाएगी। अगर रशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी मदद मांगोगे की जाएगी, मैं उनकी इस कथन का सराहना करता हूं। और भारत और रशिया की बड़ी पुरानी दोस्ती है और पुतिन मानते हैं कि भले भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सब कुछ ठीक है, पर एक बात याद रखना, हर एक चीज के भी पीछे अपना भी इंटरेस्ट होता है। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा, हम अगर पुतिन हमारे साथ में है, पाकिस्तान के साथ में कितना है, कैसे है, क्या है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर, पार्लियामेंट्री पैनल ने मांग प्रभाव से बंद कर दिया जाए। देखिए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ये अंग्रेजी शब्द हैं, सिंपल सी चीज है। जो रिलीजन के द्वारा जो आग भड़का रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं।
वो इन्फ्लुएंसर तो बड़ा सोफिस्टिकेशन आ जाती है बीच में, तो उसका जहर कम हो जाता है। बात सारी ये है, जो रिलीजन को लेकर दरार पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज भारत के खिलाफ काम करती हैं वो भी इन्फ्लुएंसर्स में आती हैं। मैं कह रहा हूं भारत के खिलाफ काम करना, ये ध्यान रखना चाहिए। ये भारत को, सरकार को उसके कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। आपने टाड़ा रखी थी, हटा क्यों दी, वो तो रखना पड़ेगा। और सारा का सारा फिर सोच विचार के बाद चिंतन करना पड़ेगा। 26/11 में तो हमको कुछ नहीं हुआ, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, हमने पार्लियामेंट अटैक में तो कोई रिएक्ट नहीं किया। जब एयरफोर्स के स्टेशन श्रीनगर में अटैक हुआ था, लोगों को गोली मार दी थी, तब तो कुछ नहीं हुआ था पहलगांव में, क्योंकि हमारी प्रेजेंट सरकार जागरूक हो गई है। ये जागरूकता का है। क्यों 75 साल हम जागरूक नहीं हुए? क्या कारण था? कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने जागरूक नहीं किया? किस फोर्स ने हमें बाध्य किया कि 4.5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे हैं, आप एक FIR नहीं लॉन्च करो? किसने आपको बाध्य किया? इसके बारे बात होगी। सर, पाकिस्तान पर मिलिट्री हमला हो सकता है? पाकिस्तान का यह कहना है कि इंडिया की तरफ से कभी पाकिस्तान में हमला हो सकता है। वो तो पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान जो मर्जी सोचे। अगर हमला हो सकता है और नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान देखेगा। इंडिया को तो क्यों बताना कि हम हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसी क्या बड़ी बात है? हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हमें अपने हित में काम करना है। जो हमारे हित में होगा करेंगे। हम क्यों टेलीविजन पे बोलें कि हमारे हित में क्या है? हमारे देश को पता है, हमारे देशवासियों को पता है हमारे हित में क्या है। तो पाकिस्तान जो मर्जी बोलता रहे। सर, UNSC और उस बैठक में ये भी मानने से मना कर दिया कि जैसे पाकिस्तान बोलता था कि लश्कर ए तैयबा उसके अंडर में नहीं है और वो नहीं जानते टेररिज्म कैसे बढ़ रहा है। इस पर कई सवाल किए गए कि आखिर आतंकवादी क्यों पनपने दिए जा रहे हैं? देखिए, सिंपल सी चीज है, पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवाद को पैदा कर रही है, मुल्ला एलिमेंट्स को लेके, रिलीजियस डिवाइड पे। जैसे आपने उनके आर्मी चीफ को सुना, हिंदू नहीं है हम, हिंदू मुस्लिम है जो, वो इत्यादि इत्यादि। ये सब उन्होंने लश्कर ए तैयबा, LET और कई पार्टीज जितने हैं, उनकी बड़ी लिस्ट है, वो सब पैदा किए हैं। सब बेसिकली उनका हनन करना है। यहाँ पाकिस्तान की आर्मी को अपने ठंडे में लगाइए, बात अपने आप हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान की आर्मी के हित में है कि वो LET को पाले, क्यों पाकिस्तान आर्मी सत्ता में रहना चाहती है। सत्ता में क्यों रहना चाहती है? क्योंकि 85% ऑफ पाकिस्तान की तजारत आर्मी कंट्रोल कर रही है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे करेगी? ये टेररिस्ट को बढ़ा देके क्या करेगी? कश्मीर का मुद्दा अलाइव रख के टेररिज्म को भेज के, और उसको सहारा मिल रहा है स्लीपर सेल्स का हमारे। तो पाकिस्तान की आर्मी तो पिकनिक में है, उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी क्यों मान जाएगी UNSC की बात? तो बात सिंपल सी चीज है। Have been ordered by the Ministry of Home Affairs in many states and various districts on May 7 amid Indo-Pak border tensions. How do you see these mock drills as a crucial step? You see, let us not dilute the whole thing by calling it mock drills. This is a very important step towards preparation for any conflict, any type of a conflict. This preparation, that is called the working of civil defense. Now, this civil defense name has been given by the world body. Actually, it's part of Geneva Conventions. In First World War, this came, though before First World War people had thought of it, but practiced it all right, but actual practice was done after during the First World War. In Second World War, it became very strong. Civil defense is an organization, because English has language, probably we have given the word defense. Actually, they protect the civil during war, so that the suffering is alleviated, the suffering is removed, is lessened, and there is no suffering, or minimum suffering they have to endure. That is what their job is, so that the effects of war are diluted as far as civilians are concerned. What happens for soldiers? They fight themselves. But why should civilians be harmed? For that is why this organization called civil defense, now America has called it the Homeland Security System. They upgraded it and all. But question is, this is very important. What it does, when the attack takes place or when it is going to take place, they prepare the public.
they brief the public, it is going to take place. So when the attack is coming, we will give you a siren. So siren, they'll hear. You will all run to the trenches and bunkers which are allotted. So for that, the trenches and bunkers will have to be built. And the hospitals will be briefed that there will be increase in the casualty list at all. So extra doctors and all. Army is requested for help. The other institutions are requested for help. Medicines are put. And the wardens are created in the civil defense organization that they overlook their own territories. In the territories, they see the bunkers are built properly, shelters are there, firefighting systems are there. If dead body is there, how to evacuate the dead body. And if there's a bomb which has fallen, which is not exploded, then bomb disposal units are established. Army is asked for help. Air Force is asked for help. So those who deal with bomb disposal and diffusing of bombs, etc., they, because a lot of bombs will fall, and then missiles, unexploded ordnance will be there, UXO, we call it. These are all part of Geneva Convention ratified by all countries. In the parliament, India has ratified it. It is our duty to actually practice civil defense every year, or periodically. So we have not practiced these exercises, and they are going to, how to receive if the evacuation has taken place, extra space for the refugees, or evacuation of your people to other places, that is there. And army people will also send their people to help. They will wear the civil defense band. And by the way, civil defense organization, what you call it, is a protected organization like Red Cross. Even if the enemy lands here, they don't attack these people. These people don't take part in war. They don't take part in war. They only carry out their activity. Even if there's an enemy soldier, they will help him out if he's wounded. So that is how it is. So civil defense organization, you have to practice it. Then we talk of chemical warfare, biological, nuclear warfare. Now we have gone with nuclear. Pakistan is nuclear, India is nuclear. Nuclear means your nuclear weapons will fall. How will you protect your people? For that, your dump bunkers are special. Decontamination centers, nuclear capable bunkers, which were capable of taking nuclear explosion, medicinal devices. All this will take place. We have to make an intense preparation. It is not that you call for an exercise and exercise ho gaya. Kya exercise ho gaya? You have to see. Sandbags have to be filled in, because when the bombs fall, your houses don't get affected. People actually put sandbags on important places, so that the shrapnels don't enter there's a wall of sandbags all around. That is done. It takes months to fill the sandbag. All public volunteers to come to get and do this. Public volunteers to build trenches, bunkers. There's a voluntary service also. Then organizations like NCC and other home guards, they're all called in to help. They don't fight the enemy when they're coming. Please remove this idea that there is a second line of defense. They don't fight the enemy. They protect the civilians from the effects of war. Sir, Russia, PM Putin dies PM Modi after the attack and assures that Russia will be in full support to India in need of any crisis. Russian attitude is very much appreciated. They have stood by us always. When 71 war, how their submarines went and surrounded the American fleet, when American 7th Fleet had landed in Bay of Bengal. Even the British fleet had to go back. We are grateful to Russia. Most of our weapon systems, everything is Russian. 85% is Russian. Russia has stood by us. And Russia, if President is saying that they will give all help needed by India for this fight against terrorism, it is highly appreciated. We should be grateful. But we must also understand, every country works in their own interest. When the country's interests converge, then it becomes synergy, and that's why they come together. But sometimes they diverge also. We must make sure that what Russia is doing. Russia is giving arms to us, supply to us, yes. Are they giving to Pakistan? What is there? Our diplomatic machinery must also keep looking into this. I don't suspect Russia. I don't say they're against us. But somewhere down the line, we must make sure our interests are not violated. Sir, media platforms and all those who are posting contents on social media against the country and in favor of Pakistan. Absolutely right. All those who are using any material or conveying any message which is anti-Indian, finish.
I put it in simple words. And the biggest thing is religious divide. People who are putting messages regarding religious divide and all the activities which translate into religious divide, any messages on that should also be banned now. Nothing doing. That should, and why have we removed these rules of which are anti-terrorist rules like TADA and all those things? We have to reintroduce those rules for the sake of a country. You can remove them later on, but now they should be there. So that's how we should work. And for that, I would personally feel that this is a very important and a very good step, and this aspect of religion must be also brought in clear terms. We should not try to hide between the lines. Nothing in clear terms. No religious divide, no message, no ideas, nothing should be conveyed. So, military strike from Indian Army can come along LOC at any moment. If Minister of Pakistan says, let him say. If India's attack comes, it will come. If it is not coming, it will not come. It's up to India. Why should we comment on it? And why should we tell them when we are going to attack and why not attack? What you have done, you must be guilty. You are scared. That's your luck. We are not going to tell what are we going to do, when are we going to attack, and how we are going to attack. We may not attack. We may have some other methods where you will come crumbling down. There you are. Fighting is a must. But the best fighting is when you get the result without a fight. When you have to fight, you fight and fight to kill. So that we'll do. So where is the problem? Sir, our very confirmed sources in New York tell ANI on Security Council member raised tough questions for Pakistan at its informal session today. They refused to accept the false flag narrative and asked whether Lashkar-e-Taiba was likely to be involved in Pahalgam attack. If Pakistan Army is asked about Lashkar-e-Taiba, and Pakistan Army and Pakistan government says, no, we don't know about it, it is their problem. We fully know that Pakistan Army wants to stay in their place. They can only stay in their place if they keep the Kashmir problem alive. And the Kashmir problem alive can be kept alive. Kashmir can be kept alive, that problem, through terrorism. And terrorism is kept alive through sleeper cells. Pakistan Army is having a ball. They are having a support of our sleeper cells, and they are giving the terrorists there. So they are in a picnic. And why they want to stay in position? Because 85% of the Pakistan business, all commercial business, goes through their associations. So who's going to cut the hen which lays golden egg, goose lays golden eggs? They are very happy. They are running all the way to laughing all the way to the banks. So they are not going to give away. In fact, the Pakistan youth, lot of political parties, they will actually be grateful to India if we neutralize Pakistan Army. The terrorism is the Pakistan Army. Pakistan Army is the head of terrorism. Our main aim should be to neutralize it, whichever method we have.